So, hello everyone. My name is Vidam Paul, and welcome to another video. This is another video of corporate interview experience playlist. So, I guess without wasting the time, let's start the video. Okay. So, I guess you have gone through the title and you have understood what we are going to discuss in this video. So, let me introduce you guys to Mr. Ayush Agarwal. He is my senior from NIT Agartala. He passed out his bachelor's from 2000 from Electronics and Communication Department in 2017, and right now he has just cracked Amazon for SDE2. So in this video, we will be just trying to explore his journey from the on-campus placement of 4 LPA to Amazon SDE2 within 4 years of bandwidth. Okay, so without wasting the time, just let's start the video. वेलकम भैया. सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू सो मच. आपने अपना मतलब इतना समय दिया वीडियो के लिए. तो कोई नहीं भाई, चलिए शुरू करते हैं फिर. प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. सो मेरा इंट्रोडक्शन तूने तो एकदम प्रॉपर दे ही दिया. आई एम फ्रॉम एनआईटी अगरतला 2017 बैच, फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, पास आउट इन 2017 as I told. I got a job in Mphasis at that time of approx 4 LPA. And after 4 years of corporate working, I am today in Amazon as a ST2 role for their few new initiatives. So starting like talking about my new journey. So when I start my career from Mphasis, I joined in August 2018, no 17, August 2017. I joined Dunmo. I start working in freelancing. I work for freelancer work also. So I can't disclose the company, but I designed one of the front login page for a bank, very responsible bank, as a freelancer. So someone else is responsible for that work on the paper, but I designed that part as a freelancer. So there is the first work which I got. I am interactive with the front end development, and that is the thing which I hate the most, the front end development. My first income of work came from that front end development. So for 1 month, every day 1 hour, approx 30 hour of work, and it gave me 25,000. So that shows me that if you go in that area, there's a lot of capabilities, not only the job. So from there I start exploring the things, what different type of things are. And in that 1 year, I stay in Mphasis for 1 year, and I don't stay in Mphasis, I learn a lot, I explore a lot. I try to explore different areas, like what different type of work in software development are, like front-end development, back-end development, DevOps, cloud. It came to security. I also worked in like mainly freelancing part. So I explore these areas. After that, I joined Synchron, and Synchron is the place. Like I'll also crack Geo. I work not there. I just dropped that company and I joined Synchron. So in Synchron, I start learning. So if I want to guide you, like if I give some tips to you, now my first tip is the programming language which you are going to choose. Learn that language inside. Like I am a Java developer, so I in Synchron. This is my first time when I'm interacting with very big companies like Morgan Stanley, JP Morgan, and these things. And after work, like interacting with these different companies, one of them selected me, and I work for them. But these companies don't ask you the overall question like what is overloading, what is overriding. They don't ask the type of questions. They ask like, you are a Java developer, how Java develop, like implement map inside, like how you are going to implement your own map, how you design your own executor service. So these type of questions they ask. So in that case, you have to understand that you have to go inside a Java coding point of view, like how that work is doing by the Java, how Java is doing that work. So this is very important to understand, because when you understand these things, you know how you can optimize your work. And sometimes it depends on the interviewer. Sometimes they ask that type of questions, like this is my query and how you can optimize it. So what is the fallback in Java, and how will you implement in another way that it is more optimized? Like for example, in Java, you can't use date and date time together because there is a bug in a Java. So you have to know it internally, how it is implementing it. Once you are done with your programming language, in now the word, and now when it came to a web development, fast development scenarios with the microservices architecture word,
The second thing which you require to choose a framework. By framework, I mean if you are a web developer, you choose some web development framework like Spring Boot. If you are a tester, you use Selenium, LeanFT, these type of frameworks. So for every work nowadays, there is a framework in any language, not only in Java. If you came in Python, there is Django, Flask. When you came in Node, there is Express. So every language there is a framework which help you to write the boilerplate code. So then understand your framework better. So once you understand the framework better, you are able to implement hard work, like the things which is harder for someone to implement in one day, you can implement in 2 hours or 3 hours when you know how it is implementing internally. So that only because in framework you are not going to learn something new. It is a framework. What the framework is something, the code is in Java, but they write your boilerplate code. So when you understand the boilerplate code better, you write it very fast. So it's the second approach which you go for. First learn a language properly, then go for a framework. For any development work, DS is must, data structure is must. So for data structure point of view, I say go for geeks for geeks. Start from basic. Don't go in a single topic and finish that topic. Like you start with array and you are finishing the array whole. Don't do that. Because what happened? You start array and you start finishing the array. So you are not taking care of the linked list. You are not taking care of the tree part. So after 2 months, you are finished with the array and you go for interview. They ask one question from array, the another question is not from array if you give a proper answer. The another question is from linked list and you are nil in linked list because till now you don't see the linked list. So don't do that part. So my approach is, so there's a book, coding interviews, crack coding interviews. So I don't buy that book. I go with a video summarize part of that book. So in this is a 15-minute video on YouTube, I think, or someone explained it on YouTube. So in that book, they mentioned that go in that manner, like 10 question from array, 10 question from linked list, 10 question from hashing, 10 question from tree, 10 question from negation. What happened in that way? That you go for 1 year experience person. They know you are a 1 year experience person. They are not going to ask you very hard questions, but they are going to judge you on different fields, like few basic questions of array, few basic questions of linked list, few basic questions of tree. So the first 10 questions which you are doing are basics one. So then you are able to crack that one, and that helps me to crack Geo and Synchron. So in Synchron, when I give the interview, I don't know the very hard part of the data structure. I don't know graph properly. I don't know proper implementation of tree. My two topics are very good. I don't know dynamic programming. I don't know greedy algorithms. So like dynamic programming and greedy algorithms are the two base bones when you want to crack any of the FAM company like Amazon, Flipkart, anyone. These are the two backbones which surely they will ask. There's no scenario where they don't ask these like questions from these domain. But I don't know these things. I just what I do, I read 10 questions from every scenarios. I only read. I don't implement also. I only read. Frankly, I only read. My linked list and my array is very strong. Is very strong. But I read everything. So when they ask linked list and array, I give a proper answer, proper explanation for that. And when they went for dynamic programming, they always went on the harder part in last, and the time is very less. So you don't have proper time to implement sometimes like you don't have enough time. So they ask only for the approach. And if you read that question, you know the approach. So I tell them the approach. You can say it luck, you can say it hard work, anything, but it works for me. So I read those questions and they ask few questions and I know the approach. I only tell the approach. If they ask me to code, maybe I am not able to, or I will take more time than expected because I know the approach to implementation. In first time, I will take a more time because some corner cases are not covered or something like that. But in they ask me the approach, I tell them the approach, and that worked for me. So this is the second way of learning. I think is a very effective way also. Make something very good in starting, like array, linked list, very good. That help you to understand the language and read every topic 10 questions, 10 questions, 10 questions. Once you are done with that part, like you are done with these things, you are ready for SD1.
In SD1 they don't ask design questions, or for startups, mainly in starting they don't ask design questions. They only ask, like when you go for a startup they give you some question as assignment. You have to that assignment with the help of any framework. Like you are a Java Spring developer, then you have to do it with the Java. It's an assignment of 2 days. You have to complete that assignment and submit them. On the basis of that they will like ask few questions and then it's done. There is no third or fourth round also. For them work is important. How you are doing that, it is not important. But they only cross check that you did do that work, no one else in behalf of you do that work. So one of the company I still remember, when I got a geo like synchron offer. So one of the company in Hyderabad give me the same type of work in front end, and they are asking me to join, but the package is less than synchron, that's why I don't join. But that's the approach, that's my first tackle with any startup, how startup ask. So once I selected for Synchron, I start working on my Java language. I start understanding the microservices word. Like then, once you selected for any good company, when you have a stable package and when you have a stable job, you start learning what is running in the environment. Like nowadays, when you ask what is running in the environment, microservices, cloud. Someone says machine learning, someone says blockchain. It depends on your domain. I am a web developer, so for me, microservices and cloud. These are the two things which are running in the system right now. So then start reading about them. I am not saying start digging them or learning them. You don't have time with the work. You joined your company very new, and you don't have any experience. So you start learning things according to the company. You have to deliver your work to the company also. So I think you don't have work. I don't have time for that one, for sure, because I also go for some other activities. Like you join some company, you start earning, you go for somewhere in restaurants or some other places. So I am assuming that you don't have enough time to learn the new technologies. Don't learn starting. At least start reading about them. What is microservices? What is cloud structure? Give few time on like 3-4 months. Give a proper understanding of these type of architecture. At least half an hour a day. Like play a video. What I do, I go for a my client office, and in Bangalore there's a lot of jam. So in that time I can't like do anything. So I put any video, I play that video. I go for a seminars, like what they are saying about microservices, what they are saying about DevOps, what they're saying about cloud. For 4 to 5 months, I go in that domain. DevOps I read, and after 6 months of like these videos, I finalize that microservices is the area in which I'm going, trying to go. Like this is my main area of work. So in this 6 months, I two things which I finalize. I have a basic understanding of DevOps. I have a basic understanding of Docker. I have a basic understanding of cloud. But I also finalize in which domain I want to go. So it helps me in two way: a journal information of the whole world, and give me a clear idea which platform helps me a lot in future. So after that, I start working in microservices domain, and after 6 months, I start learning microservices. Like what is microservices? What different architecture are there in microservices? What is the difference between a normal service and a microservices, and how I have to think different? Then look around in your system, in your work, where you can use those knowledge and implement that one. And then you start learning a little bit. Once you are done that part, start looking for design. So when you work in microservices architecture, I think your design work is also going with you, because when you are learning microservices, you are learning designs. So if you are not, like if you are not getting a work for microservices, uh, go for design part also. Learn design, learn uh, like design patterns. What are design patterns? I am very curious about design patterns, frankly, but I don't know why. But I am very curious about design patterns. I learn a lot what design patterns are, and why we are required to implement them, and where to. So it helps me a lot. In many interviews, they ask me to implement 2-3 design patterns, and like this interview is only for designing, and they ask me 3-4 design patterns. Implemented, like asked to implement two, and
Other they want explanation why we required that design pattern, why we required that design pattern, where I implement the design pattern, have I go through with any scenario where I required to specify a specific pattern. So these type of questions they ask. So once you are done with that part also, like design patterns and these things, then you are ready. Then you are ready for any company, because now you have knowledge. I am not saying that don't enjoy your life, but give an hour, like on a daily basis, give an hour and a half, like hour and a half on yourself. It's enough. Like 1.5 hours is enough if you are getting a same domain work. If you are not getting a same domain work, then it's a different scenario. Like for emphasis, I get a manual testing. So no one, manual testing is one of the shit work when it came to software development. You have to do control C and control V every time. Like control C from the Excel, control V on the website. So that I do for the 6 months. At that time, there's not a load for me because there's nothing to learn. But I have to give more time on myself. So if you are getting a same domain of work which I get in Synchron, you have to give 1.5 hours. It's more than enough. So after doing like these type of things, you are ready with all your tools, all your knowledge. Now it's part for like preparing for any company like Paytm or Amazon and SG2 roles. So like preparing for any company, the first round of DS round. So you have to finalize with the data structure. They mainly ask data structure, and it's not a single round. In multiple rounds, they ask data structure. Go for a good website like Geeks for Geeks. Put a filter of medium. Put the company name as a filter, and start doing the code. So before Amazon, I do 60 coding questions in 4 days. 60 coding questions before Amazon, and luckily they ask similar type of questions. So like for any company like Paytm or Amazon, data structure is a must. So go for any good website like Geeks for Geeks. Select medium as a filter. Select company name as a filter, and start doing the coding as much as possible. I do 60 questions in 4 days before my Amazon interview. Okay, so what happened? I have came in a zone of coding. Like my zone, the aura will change. When they ask me the question, I never look those questions. But I don't know. When you prepare those type of questions, the solution will came out to you accordingly. So the first thing. The second thing for SG2. So when you prepare for SG2, they ask surely for any design questions, like high level designing and low level designing. So as I talk, when you start working in microservice architecture and understanding how microservices will implement and what are the main blockers when it came to microservices, you working on a low level design or high level designing. For low level designing, you have to make a class diagram. So go on YouTube, see 8 or 9 low level designing questions, and do one thing: the projects which you do in your company, try to make low level design applications or examples for them, because you know the question very well, because you are working on them. And when you design for them, they are two helpful things. Once when they ask to explain your project, you are ready for that, and you also learn low level designing, and you also know why you don't take those decisions while implementing your project. So it help you out to understand more better a low level designing. There's a certain way to approach a low level designing questions. So just go on YouTube and see what are the approaches for that one. Like if you don't know the question, design API first, then go for a table design or class diagram. Then it's done. Then you have to propagate those things. You don't require anything else. So this is the thing which you required for SG2 or any big company. For SG2, you required design things, and for any big company, you require data structure. And these are the two ways only you can do it. One more thing which I want to point out here: do something extra, because some big companies ask a question like, "What you did something extra from your work, like apart from your company? Have you worked in any open source?" Like I have 2 open source projects with me. So have you worked in any open source projects, or have you done something which is not assigned to you? These type of questions they ask, HR questions type.
So do something extra that teaches you a lot and give you some bonus point above other candidates when you point out them on resume. So that's I think from my side. ओके सो भैया एक चीज बताना आप मतलब जो बोल रहे हो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स डायनेमिक प्रोग्रामिंग देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम्स राइट सो आपको क्या लगता है मतलब कॉम्पिटिटिव कोडिंग का मतलब किसी भी SD2 प्रिपरेशन या SD1 प्रिपरेशन में कितना ज्यादा हाथ होना चाहिए मतलब कॉम्पिटिटिव कोडिंग प्रैक्टिस करना चाहिए जैसे कोड शेफ कोड फोर्सेस देयर आर वेरियस प्लेटफॉर्म्स ऑब्वियसली तो वैसे टाइप के प्लेटफॉर्म से करना चाहिए या फिर मतलब डायरेक्टली आप वहां से पढ़ो या फिर डायरेक्टली मतलब आप प्रोजेक्ट में चले जाओ डायरेक्ट प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन में जाओ देखो ये आप पे डिपेंड करता है अगर आपको टाइम मिल रहा है आप जरूर करो ठीक है आपको अगर टाइम मिलता है आपको ये करना ही चाहिए क्योंकि वो आपका डीएस बहुत अच्छा करता है और आपको स्टार्टिंग में ही किक देता है शायद मैंने यही अपने कॉलेज में नहीं किया था जिससे मुझे अच्छी जॉब नहीं मिली ठीक है यदि आपको ये टाइम नहीं मिलता है आपको टाइम नहीं मिला जैसे मुझे उस समय टाइम था मैंने नहीं किया तो मुझे जॉब अच्छी नहीं मिली ठीक है अब जब मैं कंपनी में आ गया तो मेरे पास टाइम नहीं था उस तरीके के काम पे करने का तो आप प्रोजेक्ट्स में तो जा ही रहे क्योंकि आप कंपनी की तरफ से प्रोजेक्ट्स में जा रहे हो ठीक है फिर आप प्रॉपर आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाओगे क्योंकि उनको टाइम देना पड़ता है भाई प्रॉपर और स्टार्टिंग में आउटपुट उनसे नहीं आता है तो आप प्रॉपर डाटा स्ट्रक्चर पढ़ो गीक्स फॉर गीक्स की थ्योरी पढ़ो सब पढ़ो अच्छे से पढ़ो ठीक है क्योंकि आप अपनी तरफ से एक नेगेटिव कर चुके हो कि आपने अपने टाइम पे तैयारी नहीं की है जो मैंने किया तभी शायद मुझे कॉलेज से अच्छी जॉब नहीं मिली वरना कंपनीज थी जो अच्छी आई थी कॉलेज में लाइक सैमसंग आई थी ओरेकल आई थी यार तो अच्छी कंपनीज आई थी पर मेरा नहीं हुआ था क्योंकि मैं उनका कोडिंग राउंड नहीं निकाल पा रहा था कहीं लाइक इंटरव्यू मेरा रिटर्न निकल रहा था पर इंटरव्यू नहीं निकल रहा था क्योंकि जब वो कोडिंग पूछते थे तो पहले 2 क्वेश्चन अच्छे गए तीसरा क्वेश्चन जैसे ही उसने हार्ड पूछा मेरी हालत खराब हो रही थी तो आई रियलाइज दैट पार्ट और मैंने डाटा स्ट्रक्चर इसलिए पहले किया क्योंकि मुझे लगा कि डीएस चाहिए तो यदि आपको टाइम मिलता है तो आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग पक्का करो जितनी करोगे उतना अच्छा है ठीक है और एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को लेकर करो लाइक आप जावा को लेकर कर रहे हो तो आप जावा ही करो ऐसा नहीं कि लैंग्वेजेस स्विच करो जावा की कुछ सी करी कुछ ना एक करो पूरा वही करो तो आप बोल रहे हो कि जावा अगर जावा से शुरू किया तो कॉम्पिटिटिव कोडिंग के प्लेटफॉर्म में भी जावा यूज करो हाँ उसमें भी जावा यूज करो तो आपको नहीं लगता मतलब C++ से शुरू करके फिर जावा में स्विच करना मतलब जो नॉर्मली लोग करते हैं वो नहीं मैं इसके लिए बिल्कुल राजी नहीं हूँ C++ भी ऊप्स कॉन्सेप्ट रखता है जावा भी ऊप्स रखता है तुम जावा को टाइम जितना तुम C++ की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को पढ़ने में टाइम देते हो उतना तुम जावा की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को पढ़ने में टाइम दो उसको हम कलेक्शन के नाम से जानते हैं सब कुछ उसमें बराबर तो ही है मेरे पास ठीक है अब आप C++ पढ़ के वेब डेवलपमेंट में जाना चाहते हो तो C++ का यूज क्या है आप जावा में जाओगे ठीक है अब मैं कुछ अपने कलीग्स को जानता हूं जिनको कंपनियों ने लिया लेकिन कंपनियों ने उनसे पूछा जावा आती है कि नहीं वो बोले नहीं मुझे C++ आती है तो इट्स ए नेगेटिव पॉइंट है फॉर देम तो यदि आप जावा में जाना चाहते हो तो आप जावा पढ़ो और जावा में ही करो जावा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है भाई जावा जितना टाइम तुम्हें C++ पढ़ने में लगेगा अगर तुम जावा शुरू करते हो उतना ही टाइम तुम्हें जावा में लगेगा और भैया एक चीज बताइए मतलब अगर आप जैसे कि बोला कि आप वेब डेवलपमेंट में काम करते हो तो पाइथन का भी ऐसा बहुत सारे मतलब लाइब्रेरीज होती हैं जो मॉड्यूल्स होती हैं हम लोग उसको मॉड्यूल बोलते हैं तो उसको मतलब वेब डेवलपमेंट में काम आती है ठीक है ना तो मतलब आपको क्या लगता है इस हिसाब से मतलब स्टूडेंट्स जो बीटेक में पढ़ रहे हैं उसको मतलब पाइथन या जावा मतलब उसमें से कौन सा चूज करना चाहिए इफ आई टॉक अबाउट दैट द पर्सपेक्टिव व्यू ऑफ द इंडस्ट्री मतलब अल्टीमेटली इफ आई टॉक अबाउट ए लॉन्ग रन इनिंग्स then what will be the most advantageous language दोनों ही अच्छी हैं यार देखा जाए क्योंकि जावा कभी खत्म नहीं होनी क्योंकि 20 साल से इतनी डिपेंडेंसी बना चुकी है कि जब ओरेकल ने बोला हम जावा को पेड करेंगे तो ओरेकल भी अच्छे से नहीं कर पाया क्योंकि बड़ी कंपनियों ने सपोर्ट हटाना शुरू कर दिया लाइक IBM ने हटाना शुरू कर दिया और तुम्हें पता होगा कि इक्लिप्स एक आईडी हम यूज करते हैं जो जावा डेवलपमेंट के लिए वो IBM बनाती है इंडिया बेंगलोर में उसका सेंटर है तो ऐसा नहीं है कि आप जावा हटा सकते हो नहीं हटा सकते मार्केट से जावा आपने जावा हटाने की बात की जावा पे एक्यूरेट जावा से सेम कॉटलिन आ गई जावा पे पूरा एंड्रॉइड डेवलपमेंट है तो आप कोई भी लैंग्वेज चूज करो लेकिन आप ये देखो कि दोनों लैंग्वेजेस जाती कहाँ है अगर आप जावा सीखते हो तो आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए जा सकते हो और आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट को फोकस कर सकते हो उसको पॉइंट आउट कर सकते हो आप पाइथन सीखते हो वेब डेवलपमेंट के साथ आप मशीन लर्निंग की ओर जा सकते हो आप उसको फोकस कर सकते हो तो लैंग्वेज दोनों ने वेब डेवलपमेंट में आप सीख सकते हो आपका इंटरेस्ट अगर एंड्रॉइड की तरफ है तो आप जावा से लेके जाओ
क्योंकि पाइथन में एंड्रॉइड डेवलपमेंट नहीं हो सकता। हम्म। ठीक है, आप मशीन लर्निंग में जाना चाहते हो तो पाइथन एक अच्छी लैंग्वेज है जावा से, क्योंकि जावा में होता है पर उतना बढ़िया इंप्लीमेंटेशन नहीं है जितना पाइथन में आपको मिलेगा, तो आप पाइथन से जाओ। तो देखो पहले तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि हर लैंग्वेज का इंप्लीमेंटेशन किसी खास कारण से हुआ, वरना 200 से ऊपर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं होती। तो यदि तुम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चूज कर रहे हो तो फर्स्ट अंडरस्टैंड कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों है। सो भैया आपने बताया जैसे कि मतलब हम लोग को डीएस अच्छे से पढ़ना चाहिए, डीएस के इम्प्लीमेंटेशंस देखने चाहिए, सब सही है। तो डीएस के बहुत सारे लेयर्स होते हैं कि मतलब बेसिक डेटा स्ट्रक्चर, मतलब इंटरमीडिएट डेटा स्ट्रक्चर, देन एडवांस डेटा स्ट्रक्चर, वैसे होते हैं। तो आप थोड़ा मतलब स्पेसिफाई करके बता सकते हो मतलब आपने कौन सा कवर किया? जैसे कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो मतलब कुछ अगर आप बता सको, मतलब स्पेशली आपने अमेज़न के लिए प्रिपेयर किया होगा कुछ ऐसे, या फिर मतलब लर्निंग फेज में आपको लगा कि मतलब ये वाला मतलब पढ़ना चाहिए, मतलब ये बेसिक से ऊपर है, मतलब नॉर्मल के ऊपर जो है आपने अलग से प्रिपेयर किया, आप उनके बारे में कुछ बता सकते हैं क्या? देख, नॉर्मल के ऊपर यार, मैंने मेनली देखो, अगर अमेज़न के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो मैंने कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे काम नहीं किया, क्योंकि मैंने अमेज़न के लिए केवल एक काम किया, गीक्स फॉर गीक्स पे मीडियम सिलेक्ट किया, कंपनी सिलेक्ट की और क्वेश्चंस लगाना शुरू किए, जो भी आया लगाया। ठीक है। अगर तुम प्रिपरेशन फेज की बात करो तो लिंक लिस्ट तो नॉर्मल, बाइनरी ट्री का सर्चिंग वगैरह नॉर्मल है, रिकर्शन नॉर्मल है, डायनेमिक और ग्रीडी एल्गोरिथम ये दो, और टाई डाटा स्ट्रक्चर, बस ये तीन। ओके। हाँ, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा अभी तक किसी ने नहीं पूछा। ओके। और बेसिक्स में मतलब आपको बैक ट्रैकिंग या फिर हैशिंग से क्वेश्चंस ऐसे कुछ? हैशिंग बहुत। Okay, and graph algorithms like Preem, Kruskal, then Bellman-Ford or Dijkstra's, मतलब शॉर्टिंग आप पूछ सकते हैं, लेकिन ग्राफ से आज तक एक ही कंपनी ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा है बस, वो भी नॉर्मल डीएफएस का। ओके, तो बेसिकली मतलब या इनडायरेक्टली पूछा था डीएफएस, लेकिन वो डीएफएस था बस। ओके। और मतलब डीएस एल्गोस और फ्रेमवर्क और लैंग्वेज, उसके साथ मतलब और कोई अलग से कुछ सब्जेक्ट से, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस? डेटाबेस में बेसिक पूछ सकते हैं, एक या दो क्वेश्चन बस। लाइक आपको बेसिक आइडिया तो होना चाहिए ज्वाइन क्या होते हैं, ये क्वेश्चंस तो आपके बेसिक आइडियाज हैं कि ज्वाइन क्या होता है और कितने तरीके के ज्वाइन होते हैं, इस ज्वाइन का क्या अंतर है, नॉर्मलाइजेशन क्या है। तो बेसिक क्वेश्चंस जो होते हैं वही। अगर आप डीबीए के लिए नहीं जा रहे हो तो आपको उससे ज्यादा नहीं पूछेंगे वो। तो बेसिक आइडिया तो जैसे मैंने कहा कि मैंने 6 महीने हर एक चीज पे मतलब कोशिश किया एक्सप्लोर करूं। तो 6 महीने तक बहुत कुछ एक्सप्लोर किया। तो बेसिक आइडिया है। जैसे उसने एक दिन पूछ दिया किसी ने कि यू नो व्हाट इज डेवऑप्स, सो हाँ आई नो व्हाट इज डेवऑप्स, समझाया, लेकिन आई एम नॉट अ डेवऑप्स पर्सन, सो वो ज्यादा डेप्थ में जाएगा भी नहीं। ठीक है। यू नो गिट, हाँ तो गिट आता है, गिट पे काम किया है, अच्छा ठीक, खत्म। डॉकर आता है, यहाँ डॉकर पे थोड़ा बहुत काम किया है, एक दो चीज, डॉकर क्या है तो ये बता दिया क्या है, उससे ज्यादा डेप्थ में वो नहीं जाएगा। तो डेप्थ में मेनली डीएस एल्गोस में वो लोग जाते हैं फिर। हाँ, मतलब किसी भी इंटरव्यू में जिस डोमेन के लिए आप जा रहे हो, तो आप मतलब जो डोमेन के लिए अप्लाई किया वो स्पेसिफिकली कौन सा टॉप पार्ट था, आप ये बताया नहीं आपने? जावा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तो जावा स्प्रिंग बूट वाला पार्ट मेरा था। तो जावा, तो अगर आप डेवलपर जा रहे हो तो डीएस आपका एक 1 हो जाता है, दूसरा आपके डिजाइन पैटर्न्स हो जाते हैं, और तीसरा आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और आपका फ्रेमवर्क हो जाता है। तो ये 3 इंटरव्यूज होते हैं, हर एक का 3 ही का इंटरव्यूज का पैटर्न होता है। एक कोडिंग राउंड या डाटा स्ट्रक्चर राउंड, दूसरा आपका कहलाता है डिजाइन राउंड, और तीसरा आपका कहलाता है लैंग्वेज राउंड, जो कुछ में होता है, कुछ में उसकी जगह भी डाटा स्ट्रक्चर लेते हैं। तो ये डिपेंड करेगा। तो कुछ कंपनीज लाइक वॉलमार्ट आपका प्रॉपर लैंग्वेज राउंड लेती है। लाइक जावा के हो तो एक बंदा जावा प्रॉपर पूछेगा 1 घंटे। ओके। Thank you so much, Bhaiya, for giving such time for the video, and obviously, I hope the viewers must be benefited by your tips and tricks and all. So,
So guys, if you really like this video, please hit the like button, and if you have any kind of doubt, then let me know through comments below there. अगर बहुत सारे क्वेश्चंस आए ऐसे, तो मैं कोशिश करूंगा भैया का थोड़ा सा और टाइम लेके Q&A कर सके तो ठीक है। तो आपको कोई भी क्वेश्चंस हो, तो आप किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, इंटरव्यू रिलेटेड या फिर कुछ भी, आप डाल सकते हो कमेंट में, ठीक है। तो ठीक है गाइज, और सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल पे नए हो तो, और प्रेस द बेल आइकन सो दैट द अपकमिंग वीडियोस आल्सो वुड बी रीच्ड यू थ्रू नोटिफिकेशन। सो दिस मच फॉर टुडे गाइज, सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।